Hello students. Yes, in the last video we have studied about the different type of respiratory organs that are present in the different animals. Okay. Now today we will study about the human respiratory system. Okay. Now see the diagram. This is the view of a human respiratory system. Okay. You everybody knows in the respiratory system what are the organs of the respiratory system. The main organs of the respiratory system are the everybody knows that we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. Okay, we have a two openings above the upper lips, and these are known as nostrils, and these nostrils leads to a nasal chamber through the nasal passes. Okay, now from these openings open into the nasal chamber. A path is there, and this path is known as nasal passage, and this nasal passage chamber open into the pharynx. Okay, pharynx, and you know the pharynx is a portion of which it is a common passage. You can say pharynx is the common passage for the food and air. ओके आपने पहले पढ़ा हुआ है, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, दैट एक कॉमन पाथ होता है हमारा जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन जाता है. ओके, और फूड जो हम खाना खाते हैं उसके लिए कॉमन पैसेज होता है, दैट इज़ कॉमन पैसेज, एंड दिस कॉमन पैसेज इज नॉन एज pharynx. ओके, एंड दिस pharynx ओपन थ्रू द larynx region into the trachea. Okay, then after the pharynx open into the larynx, then the trachea. Okay, you can see in the diagram. Okay, larynx is there. Okay, so pharynx is the common passage for the food and air. Get it? And then pharynx open into the larynx. Okay, what is the larynx? Larynx is the cartilaginous box. Okay, it is made up of cartilage and it help in the sound production. Okay, and hence called the sound box. That's why it is known as sound box. को sound box बोला जाता है. Okay, because it is made up of cartilaginous box. और जो हमारी आवाज़ आ रही है, okay, sound आ रहा है, okay, तो ये sound किसकी वजह से आ रहा है? Because of the larynx. Okay, so that is the larynx, and they help in the production of sound box. Okay, during swelling. Okay, now you can see a epiglottis. Okay, epiglottis there you see in the diagram. What is this epiglottis? This epiglottis, it is made up of a thin elastic cartilages. It is also made up of cartilage. Okay, and it is a thin elastic flap, you can see. Okay, flap है, ढक्कन है, covering है, it is known as covering. Okay, and it is known as epiglottis. And what is the function of it? Okay, it prevent the entry of the food into the larynx. Okay, we are saying that in the pharynx we having a common passage for the food and air. Okay, अब जो food और air का एक ही common passage है, तो ये क्या करेगा, जब suppose okay हम क्या कर रहे हैं, हम जब क्या करेंगे, हमारा फूड आएगा, एंटर होगा pharynx में, तो एपिग्लोटिस जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लैप में वो कवर कर देगा, है ना, इस फूड विंड पाइप है उसके ऊपर उसको क्या हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी एपिग्लोटिक से. ओके, तो ये जो पाथ है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और फूड क्या होगा, स्लिप होके कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा. ओके, गेट इट? तो दैट्स वाई it's a flap, and it is made up of cartilage. It's a thin elastic cartilaginous flap. Okay, get it? So it prevent the entry of the food into the larynx. Okay, get it? Now next is the trachea. After the larynx, okay, then there is the trachea, and it is a straight tube. Okay, you can see it's a straight tube like structure. Okay, and it extending up to the mid thoracic cavity which divide. आप देख सकते हैं thoracic, जो हमारा thoracic chest cavity, you can say जो chest cavity है, okay, वहाँ तक के क्या करता है, extend करेगा, and it divides at the level of the fifth thoracic vertebra into a right and the left primary bronchi. अब देखो वो two parts में divide हो जाता है. okay, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 2 पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाइज बोल रहे हैं. ओके, इट इज़ नॉन एज
bronchi. So it divide into two parts, okay, further, and each bronchi then undergoes repeated division, okay. Again it's divide, these bronchi divides and form a secondary and tertiary bronchi, okay. Further it divides repeatedly, get it, and it is forming the secondary and tertiary bronchi, and these are known as then bronchioles, okay, and ending up in very thin terminal bronchioles, you can say. You can see in the diagram bronchioli where it is written, bronchioli नज़र आ रहा होगा आपको. फर्दर जो आपका ब्रोंकाई है वो क्या हो रहा है, ब्रांचेस, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है वैसे डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होके कितने प्राइमरी, यू कैन से सेकेंडरी, टर्शरी, ओके. अगेन एंड अगेन इट इज़ डिवाइडिंग into a different branches, and it is known as bronchioli, okay. Get it? Then one thing is there, that there is in the trachea you can see the ring like structures are there, okay, ring like structures, and these rings like structure is made up of cartilage, okay. Cartilaginous rings are there, okay. And why these are there, why these cartilaginous rings are present, so your trachea, your windpipe do not collapse, okay. Otherwise due to the pressure of air it collapse. That's why there are the cartilaginous rings are present in the trachea, okay. Get it? And it prevent from the collapsion, get it, okay. Then after the bronchioles we have discussed here now bronchioles, then bronchioles, okay. After the bronchioles, these bronchioles give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoles, okay. You can see alveoli bag like structure, okay. So these bronchioles give rise to a number of thin, पतली होती हैं, irregular walls are there, irregular walled होती है, vascularized bag like structure होता है, and these are known as alveoli, उनको alveoli बोला जाता है, okay. And the branching network of bronchi, bronchioles and alveoles comprise the lungs, okay. Get it? And we have two lungs, everybody knows, you can see in the diagram also, we have a two lungs, right and left lung are there, okay. And each lung, you can say these lungs are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. Pleura, you can see pleural fluid आपको दिख रहा है, you can see in the diagram, okay. Pleural fluid, pleural membrane, okay. So they are covered with the pleural membrane, and this membrane are filled with the fluid, and this fluid is known as pleural fluid. And what is this? What is the function of this pleural fluid? It reduce friction on the lung surface, okay. Get it? What is why the pleura is there? Why the pleura filled is there? Because it reduce the friction on the lung surface. Lung surface पर वो friction को क्या करेगा? कम करेगा. That's why the fluid is there, okay. Get it? Okay. जो हमारा पार्ट जो स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ओके. हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम देखा आपने, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा था, एंड अप टू द नॉस्ट्रिल, अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोलिस कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, ओके. जो हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोलिस तक का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज कंडक्टिंग पार्ट, ओके. एंड देन आफ्टर द एल्वियोलिस, ब्रोंकियोली के बाद हमारा क्या आता है? एल्वियोलिस आ रहा है, ओके. तो एल्वियोलिस, okay, and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. तो वो वाला पार्ट क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट हो गया. ये क्या हो गया? एल्वियोलिस क्या हो गई? एक्सचेंजिंग पार्ट हो गया, ओके. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो गया? एक्सचेंज पार्ट हो गया, ठीक है. तो जो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली, ओके. जो कंडक्टिंग पार्ट होगा वो एयर को ट्रांसफ़र करता है एल्वियोली तक, ओके. एंड क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स. अब बाहर से एयर आ रही है तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होंगे? फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे, पर डस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है. तो जो कंडक्टिंग पार्ट है आपका, ठीक है, कंडक्टिंग नोज, जैसे नॉस्ट्रिल्स हुए, नेजल पैसेज हुआ, फेरिंग्स है, लैरिंग्स हैं, ट्रेकिया है, ये सब क्या कंडक्टिंग पार्ट हो गया. और कंडक्टिंग पार्ट क्या करते हैं? जो आपकी एयर आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, उसको फॉरेन पार्टिकल्स से फ्री करेंगे, क्लियर करेंगे, ओके.
humidifies and bring also the air to the body temperature. उसको humidifies करते हैं और उसको अपने बॉडी, उस एयर को अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाते हैं. ओके, गेट इट. एंड देन द एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द, अब जो एक्सचेंज पार्ट है वो क्या है आपका एल्वियोली है. ओके, एंड इट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. गेट इट. Okay, respiration involves the different following steps. So what are the steps that are involved in the respiration? Okay, first thing is that breathing or pulmonary ventilation. Okay, breathing or pulmonary ventilation mean that the CO2 rich, okay, CO2 rich air is drawn out from the body, okay, you can say from the alveoli, okay, and released out in the atmosphere. Second process is there that the diffusion of gases like O2 and CO2 across from the alveolar membrane. And third is the transport of gases by the blood. Okay, the different type of gases like O2 and CO2, these are transported by the blood in the respiration. Diffusion of O2 and CO2 between the blood and tissues. Get it? Because the blood carry the oxygen and carbon dioxide. Like utilization of O2 by the cells, oxygen by the cells. Okay, and the oxygen is utilized by the cells for the production of the energy. Get it? So these are the steps that are involved in the respiration process.